Hello, everybody. We are back with our live session again. This is me, Anam, and today's session is really, really good because we have Saddam Hasan with us today, and it is an session where everyone can ask anything that you want. So I'm just going to let him in a while. But before that, I just want to make sure that we are live on all of our platforms. So just give me a second or two and let me know from where you are and where have you joined from. And apart from that, we have another very interesting thing to talk about. I guess you all know that we are going to have a special announcement. And yes, but before that, I just have one small problem, and that will be resolved right now. Do mention in the comment section if you guys can hear me clearly and where are you guys from. We would love to hear from you guys as well. All right. We are live a bit earlier than we had decided, but I guess that's not a problem, right? The more time, it's better for you guys to ask your questions. All right. I think I'll be able to resolve one of the problems. Just let me know if I'm live right now on Instagram, Facebook, and YouTube. Okay. Please let me know in the comment section that am I live on Instagram right now or not? Yes, I am. Welcome, everybody. We are here on our live session with none other than Saddam Hasan, and we are shortly going to let him in. But again, okay, so that's great. That's great. That's great. Just, I think the people on Facebook were waiting for it for a very long time, but yeah. So yeah, I hope you guys can hear me. And okay, Ali is from Karachi. Welcome, Ali. We're really happy to have you on board. Who else has joined us? And can you all can hear me clearly and see me clearly? Because last live session had some chaotic moments. We were losing our guests constantly. पाकिस्तान में थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो जाता है, but I hope आज ऐसा कुछ भी नहीं होगा.
Yes, Amna, welcome. We are really thrilled to have you on board as well. On Instagram right now. All right. Okay, so we can start our live session now. Okay, thank you so much. It's really nice hearing from you all. And we have Hafiz. Hafiz, welcome. We really liked hearing all the questions that you had in our previous live session. And Umay, you are from Lahore. We are all very thrilled to have you guys. And we have D-Ram from YouTube. Okay. Kashif Abid has also joined us now. So before anything else, I would just like you all to prepare your questions because it's really not easy to catch hold of Saddam that easily. You guys ask questions on Facebook and he takes out time for that. But I would say avail this opportunity and wait up for the special announcement. You all are going to be very thrilled. So let's have our member Assalamu alaikum, here. Anam, Walaikum and assalam. hello. Assalamu alaikum to everyone. Acha, Anam, so I don't have that whole chat set up. So, I think questions up. You're gonna Sure. mention them in a. Okay, sounds good. So I do have my Facebook group chat open. I can see the questions there. How's my audio? आवाज सही आ रही है? It's absolutely perfectly fine. We can hear you जबरदस्त. loud and clear. Sounds good. And is there a way for me to share my screen? I'm really bad with these things, so I just want to make sure Yeah, I have that you up. can share your screen. There must be an option of presentation down there. Sounds good. So let me try to share my screen here. And Present. basically, साथ में ना एक countdown लगा होगा so that people know when the announcement is coming up. I'm really There excited you for go. that. Can you see? Acha, you guys can see it? Yeah, perfect. I hope it's not taken up. Okay, it's not. I can see it now. So where is it? Okay, let's see. एक सेकेंड अच्छा मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ. I just want to have the right window open so I Just can let me know share when with you you. want the entire presentation to be on screen. Then you and me won't be there on the screen then. Sounds good. Yeah, मतलब आज हमारे पास कोई as such presentation नहीं है. I just wanted to keep it open. Anyone can come in, ask questions. तो हम question answers करेंगे. फिर आधे घंटे में we'll just go towards the announcement. So I have a really good announcement, and I'm really excited कि लोगों के साथ वो मैं share करूँ. So are we. So are we. And I hope everyone can avail the opportunity that you are putting forward for everyone over here. Absolutely. Okay, so I think I've got it set up. Yeah, we have a lot of people coming in right now. Thora time lagega, I guess. Okay. But how's the weather in Canada? It's good. It's getting cold. Abhi, I think next week snow पड़ जाएगी. Oh So wow. yeah, लेकिन I'm not gonna be around. मैं परसों निकल रहा हूँ बाली के लिए, Indonesia. So Okay. I'll be there for about a month and a half. फिर I'm going to Thailand. And after that, inshallah, the most exciting trip is going to be Pakistan. So Okay. वहाँ पे फिर I'll be there for like about a month, 2 months. Yeah. All right. Any specific reason why you're traveling to Bali? To Bali, huh? Just wanted to see. I haven't seen my villa yet, तो एक तो उसको देखना था, Okay. just to see how it is. And खैर वो मतलब Airbnb पे लगा हुआ है, so it's going well. Plus मेरी team भी उधर होती है, so I wanted to go pay them a visit. And why not? अगर यहाँ पे snow पड़ रही है, I don't want to be here. I would much rather be on a beach, Under the sun, yeah. गर्म weather में. Yeah, yeah. So if you guys haven't been to Bali, बहुत प्यारी जगह है. I think लोग कहते हैं कनाडा बहुत प्यारा है, लेकिन एक दफा आप बाली जाओगे ना तो आपका पूरा पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो जाएगा. It's really beautiful. And of course पाकिस्तान में भी obviously लोग अक्सर कहते हैं यार पाकिस्तान तुम ट्रैवल करो, तुमने सही नॉर्दर्न एरियाज वगैरह देखे नहीं है. I think पाकिस्तान की ब्यूटी अपनी जगह, but Bali has a lot to Oh, offer as well. अच्छा, okay. I thought you might say कि पाकिस्तान की northern areas की बहुत beauty है and everything, but so yeah, that's nice. That's nice to hear. Yeah. So let's start taking कोई questions तो नहीं है अभी तक, Anam? Not yet. We are still waiting for that. We don't have any Sounds good. questions.
आज मैं सुबह Really? उठा तो आई वाज रियली एक्साइटेड टू वॉच न्यूजीलैंड पाकिस्तान की जो Yeah. मैच जो था। That was a surprise as well, actually, the way they won. आई डोंट नो ये लोग फखर जमान को क्यों नहीं खिलाते। आई जस्ट वांटेड टू सी कि मैं उठा, अच्छा मैंने कहा ये तो बड़े अच्छे जा रहे हैं, एंड देन आई नोटिस कि मैच खत्म हो गया, वो बारिश पड़ गई है। सो No, no. But Fakhar Zaman did a tremendous job. 401, I guess, was the target. 400 या above. So they बिग won. टारगेट, So there's double celebration today over here. जबरदस्त। तो अभी क्या लग रहा है, पाकिस्तान का कोई चांस है? अच्छा इन लोगों ने तो लेवल कर दिया, जबरदस्त। Yeah. Yeah. सो आई थिंक So एक और मैच रह गया पाकिस्तान का, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इंग्लैंड के साथ है, न्यूजीलैंड का मेरे ख्याल से श्रीलंका के साथ है। या yeah. वाह, Okay. बहुत क्लोज हो गया ना। Yeah. ये लोग नेट रन रेट में थोड़ा अच्छा है, बट इफ पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड बोथ विन इट विल कम डाउन टू द नेट रन रेट। बट अगर तो न्यूजीलैंड हार गया, जो कि मुझे लग नहीं रहा, एंड पाकिस्तान जीत गया, तो फिर तो डायरेक्टली पाकिस्तान आगे चले जाएगा। सो दैट्स No, at this moment, I can only recall one meme जिसमें वो they're saying कि इससे हार गया तो पाकिस्तान आ जाएगा, उससे हार गया तो पाकिस्तान आ जाएगा। तो every World Cup we have these hopes कि अब वो टीम हार जाएगी और पाकिस्तान इधर से जीत जाएगा तो फिर हम सेमीफाइनल्स में पहुंच जाएंगे और सब कुछ। ये So हमेशा ही Saddam, होता है। there's one comment I find on our Facebook page, a group every other day. And that is, I want to be part of the WhatsApp group. I want to be part of the WhatsApp group. I think we should just solve the mystery over here. And you can let them know because Pichle live pay, Jawad also said that, it's such a helpful group of people that mastermind has helped so many people with their agencies, with their business. And I'm part of that group as well. I can see how one on one everyone is helping each other out and how everyone is thriving from that. Other members of the group also want to be part of that group. So what would you have to say to that? या सो हमारे थोड़े मल्टीपल ग्रुप्स चल रहे हैं इस वक्त। देयर इज 3 डिफरेंट ग्रुप्स, एंड यू कैन बी पार्ट ऑफ 2 फॉर श्योर। ओके, सबसे पहला ग्रुप जो है वो मास्टरमाइंड का है। वहाँ पे हमने सिर्फ लिमिटेड फॉर नाउ अभी इसलिए रखा हुआ है बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड के जो बड़ी एजेंसीज हैं पाकिस्तान में, मिनिमम मतलब वी आर लुकिंग एट कि आप कम से कम around 10-15,000 per month तो कर रहे हो consistently, and it's an agency. So we kept that a bit limited. उसमें कुछ बड़े वाले भी हैं जो कि 500,000 तक पहुंच गए हैं, कुछ हैं जो कि बिल्कुल around 10-15,000 per month के करीब हैं। So they're doing about at least more than 100,000 a year. So उस ग्रुप का मकसद क्या था कि आई अंडरस्टैंड के जो बड़ी एजेंसीज है वो कहाँ पे स्टक है, हाउ कैन आई गेट देम टू 1 मिलियन क्विकली एंड एज फास्ट एज पॉसिबल। वो मैंने जान के थोड़ा क्लोज ग्रुप रखा हुआ है। आई विल ओपन इट अप एट सम पॉइंट, लेकिन अभी के लिए वो बंद है। इंशाल्लाह मे बी जनवरी ऑनवर्ड्स वी विल री ओपन इट। तो जो एजेंसीज हैं जिन्होंने ऑलरेडी 100K वाला थ्रेशोल्ड जो है वो पार कर दिया हुआ है, उनको फिर मौका मिलेगा उस ग्रुप में एंटर होने का। अच्छा, ये तो हो गया मास्टरमाइंड ग्रुप। दूसरा हमारा ग्रुप जो है वो सिंपली फ्रीलांसर्स के लिए है। मे बी अनम आप क्या कर सकती हैं, whoever wants to join that one is open to join। so वो मोस्टली हमारे जो कोचिंग कॉल्स नहीं होते, Yeah. हमजा या कामरान जो लीड करते हैं, उनके लिए बेसिकली हमने सेपरेट ग्रुप बनाया हुआ है कि अगर फॉलो अप कोई क्वेश्चन हो आफ्टर कोचिंग कॉल्स या वो कहीं पे स्टक हो, मे बी फाइवर अपवर्क, we can provide them support and answers as needed. So That, वो हमारा दूसरा ग्रुप है that open. Anam, you can post maybe the link to that. okay, sure, I'll do that. ये फेसबुक के जो लाइव सेशन है उसके कमेंट सेक्शन में मैं उसका लिंक पोस्ट कर दूंगी। जबरदस्त। एंड इवन आफ्टरवर्ड्स अगर लोगों को आसान होता है, हम एक क्यूआर कोड आई थिंक जनरेट करता है व्हाट्सएप, सो वो भी हम शेयर कर सकते हैं एंड यू गाइस कैन जॉइन। बस ट्राई नॉट टू स्पैम, मतलब अगर ज्वाइन करो तो स्पैम ना कीजिएगा क्योंकि व्हाट्सएप पे हर किसी के पर्सनल नंबर्स होते हैं। सो just be respectful and bring good questions so they will be answered। जो तीसरा ग्रुप है वो हमारा 3 डे चैलेंज वाला ग्रुप था, जिन्होंने बेसिकली ऑफर का वेबिनार जो है वो क्रिएट किया हुआ था। एंड उसके ऊपर ना मुझे
इतने मैसेजेस व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, हर एक सोशल मीडिया चैनल के ऊपर मुझे पर्सनली बहुत मैसेजेस आ रहे होते हैं कि हाउ डू वी एक्सेस दैट. इट इज अ पेड चैलेंज, लेकिन आई थिंक बिकॉज इट्स सो बेनिफिशियल एंड इट्स सो क्रूशल, पहली स्टेज है जहाँ पे इफ यू गेट द ऑफर राइट, यू कैन, अगर 2-3 हज़ार पे स्टक हो तो आप तो इजीली डबल कर सकते हो जस्ट जस्ट बाय गोइंग थ्रू दैट 3 day चैलेंज. तो मे बी व्हाट वी आर गोना डू is this coming week we will upload that challenge. हमने वो उसको रिकॉर्ड किया हुआ था वेबिनार को, उसको हम अपलोड करके ओपन कर देंगे सारों के लिए, सो एवरी वन कैन एक्सेस इट देन. एंड वो मिस्ट्री जो है ना वो सारी चली जाएगी. देन यू गैस कैन जस्ट डू द वेबिनार. वेबिनार के एंड पे QR कोड है टू join the WhatsApp group, so just join that. And again, as you guys have any questions, bring them, we will answer them. Okay. All right. Yeah, Okay. So we have few questions, and those are from Facebook. Can you see them, Saddam? let's see. Yeah, okay. आपका so कुछ random Shabir. question है. अली कराची में. Okay, sounds good. वो शेयर कर रहे हैं कहाँ से. So शबीर से हम शुरू करते हैं. I want to join. ये तो I think आंसर हो You गया. just answered. या सो शबीर, आपके पास दो व्हाट्सएप ग्रुप के ऑप्शंस होंगे, ऑफर वाले ग्रुप या वेबिनार वाले ग्रुप, एंड देन फ्रीलांस वाले ग्रुप. आई थिंक अगर दोनों में आपको कोई डिसाइड करना है, ज़रूर आप वेबिनार वाला ग्रुप तो ज्वाइन करें, क्योंकि और एटलीस्ट गो थ्रू दैट वेबिनार. वो फ्री हम कर रहे हैं, पहले पेड था, एंड आपको उससे बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलेगी. सो शबीर का फॉलो अप क्वेश्चन क्या है? I want to ask question how we can close client on percentage basis. Some clients product is not much good that it can convert to sales. What strategy should be for such clients? Some clients products isn't good that it can convert into sales. Okay, so अगर product अच्छा नहीं है, usually हम क्या करते हैं कि जो beginner products है ना, we don't tie into percentages. Let's say revenue के percentage के ऊपर तो हम कभी भी नहीं tie करते, क्योंकि we don't know how that product is going to perform. और ये थोड़ा Amazon specific है, but it can go for any kind of service. अगर website है, कुछ भी है, if you're tying it to revenue, you need to make sure कि वाकई में उसके अंदर जान है, उसकी अच्छी हिस्ट्री है, ताकि आप अपना जब काम करोगे तो उसको एक अच्छा बूस्ट मिलेगा. अगर तो सेल्स हिस्ट्री नहीं है, देन आप भले ही बहुत अच्छी सर्विस भी कर दो ना, देयर सो मेनी अदर फैक्टर्स दैट कम इनटू इट. जरूरी नहीं है कि वो रेवेन्यू उसका इंक्रीज ही हो. सो डोंट टाई टू रेवेन्यू अनलेस इट हैज अ गुड रेवेन्यू बेंचमार्क या अच्छी रेवेन्यू हिस्ट्री है. Amazon के केस में हम क्या देखते हैं कि अगर 10,000 या उससे ज्यादा रेवेन्यू है पर प्रोडक्ट, दैट्स व्हेन वी टाई टू रेवेन्यू. तब हम कहते हैं, हम एक ग्रोथ प्लान हमारा होता है. सो ग्रोथ प्रोग्राम में वी डू देयर एडवर्टाइजिंग, फुल अकाउंट मैनेजमेंट होती है, एंड यूजुअली हमारा रिटेनर जो है वो 1000 प्लस 5% ऑफ एनी ग्रोथ. And the way we close them is we ask, I think, Anam, ek, sorry, just one thing. There's a question in the freelance group, Anam, if you can just answer that. Maybe उनको Okay. पता नहीं है कि कहाँ से join करना है. Okay, So I'll do that. yeah, so just going back into it, 1000 plus 5% growth हम किस तरह करते हैं? We do it by price anchoring. या तो हम उनको ऑप्शन देते हैं कि हमारा अगर फुल रिटेनर पे जाना है ना, आपको 3000 पर मंथ पे करना होगा. यूजुअली वो लोगों के लिए ज्यादा होता है. सो व्हाट दे प्रेफर इज कि यार रिटेनर्स लो हो, एंड भले ही आप परसेंटेज ऑफ मे बी रेवेन्यू या प्रॉफिट या उसके ऊपर कर सकते हो. एंड इन द बिगिनिंग स्टेजेस इट्स नॉट एज हेल्पफुल, लेकिन जैसे ही अकाउंट ग्रो होता रहता है, अभी हमारे पास कुछ अकाउंट्स हैं जिनसे पर मंथ हमें $5,000-6,000 पर मंथ आ रहे हैं. सो उनको हमने 1000 प्लस 5% ऑफ ग्रोथ पे ही क्लोज किया था. नाउ हाउ कैन यू क्लोज देम? एज आई मेंशनड, नंबर वन स्ट्रेटजी इज प्राइस एंकरिंग. आपको अगर एक हाई प्राइस फिक्स्ड प्लस एक ये इसको परफॉर्मेंस बेस्ड प्राइसिंग कहते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड पे आप करते हो, सो दे विल ऑलवेज लीन टुवर्ड्स परफॉर्मेंस बेस्ड. सो दैट्स वन टैक्टिक. दूसरा ये कि you really have to figure out के what is it that is directly in control with you. Let's say ad spend है ना, percentage of ad spend पे लोग advertising usually pitch करते हैं. That's something you have direct control over. लेकिन
Sellers don't really like that percentage of ad spend. That means कि आपके इंसेंटिव में है कि ज़्यादा ad spend करो। सो वहाँ पे भी आप कुछ रेवेन्यू के साथ टाई इन कर सकते हो। इट रियली डिपेंड्स कि आपकी सर्विस कौन सी चीज़ को ड्राइव कर रही है और क्या वो बेनिफिशियल है सेलर या क्लाइंट के लिए। ये 2 चीज़ें हैं। कैन यू ड्राइव दैट नंबर? इज़ इट बेनिफिशियल फॉर द क्लाइंट? एंड इफ दोज़ 2 आर येसेस, तो you can create that percentage based pricing. Hopefully that answers the question. अच्छा, लीड जेन का फिर एक क्वेश्चन आ गया। Which lead gen method do you think work good? I'm trying cold emails, but the results are not fruitful, so look for your guidance. Okay, cold emails का बहुत बड़ा इशू है। हमारे पास 30,000 emails की लिस्ट है। Okay, now if I was to do cold emails, होता क्या है? सबसे पहले तो 30,000 की ईमेल लिस्ट को आप ब्लास्ट करोगे, तो डोमेन ही आपको पकड़ लेगा। गूगल आपको पेनलाइज कर देगा कि इतना स्पैम आप क्यों कर रहे हो। सो आई डोंट इवन रेकमेंड कि कोल्ड ईमेल्स आप अपने डोमेन से करो, अगर आपने करनी भी है। यूजुअली यू वांट टू हैव लाइक 5 टू 6 डोमेन्स, एट मैक्स 5,000 से ज़्यादा ईमेलें एक डोमेन से नहीं जानी चाहिए। अगेन, जितना उसका ओपन रेट कम होता है, उतना ही गूगल स्वीट या जो भी जिसका भी डोमेन होता है, वो आपको पेनलाइज़ करेंगे कि ये स्पैम ईमेल्स हैं, दैट्स व्हाई ओपन रेट लो है। अच्छा, लेट्स से आपने डिसाइड कर भी लिया कि मैंने कोल्ड ईमेल्स करनी है। नाउ थिंक अबाउट इट दिस वे, आपके पास लिस्ट है 1000 ईमेल्स की। आपने सारों को सही अच्छी मार्केटिंग मैसेजिंग के साथ एक ईमेल ब्लास्ट कर दी एंड आपके पास पूरा सीक्वेंस पड़ा हुआ है 6-7 ईमेल्स का। एक तो आपका ओपन रेट जो है ना, वो बहुत भी चला गया। दिस इज़ फॉर कोल्ड ईमेल्स, बहुत भी ऊपर चला गया, इट्स कैन बी अबाउट 20%। ओके? सो 1000 में से सिर्फ 200 लोगों ने उसको ओपन किया। अच्छा, अब उनमें से सिर्फ मे बी 10% जो हैं, वो आपका सीटीए क्लिक कर रहे हैं। लेट्स से बुक अ कॉल हो गई या कुछ भी हो गया, राइट? आपने उनको कहा कि हमारे साथ कंसल्टेशन बुक कर लो या गेट अ कोट, एनीथिंग लाइक दैट, मे बी 10% ऑफ देम विल ओपन इट अप। सो 200 में से अगर आप 10% करो तो इट्स लाइक अबाउट 20। सो आउट ऑफ ऑल द 1000 लीड्स, only 2% actually clicked on the CTA, जो call to action button होता है। Instead, अगर वो आपके साथ एक और सिनेरियो है कि आपके पास अपॉइंटमेंट सेटर्स हैं एंड वो बस इन सारों 1000 को यू हैव द नंबर्स, इफ यू डोंट हैव नंबर्स, अपोलो और इस तरह की बहुत ऐप्स हैं दैट विल गिव यू द नंबर्स, वो आपके लिए डेटा स्क्रैप कर देंगी। अपॉइंटमेंट सेटर जो है वो दिन में ईजिली आई वुड से दिन के अंदर वो अराउंड 50 कॉल्स कर सकता है। सो 1000 की लिस्ट जो है ना, उसके कितने हो गए? ये तकरीबन 20 डेज का काम, महीने का काम है। 1000 की लिस्ट को वो सारों को कॉल करेगा, उसमें से उसका गोल क्या है कि सिर्फ क्वालिफाइड लीड्स को आपके साथ कॉल दैट्स इट। एंड आउट ऑफ दैट, यूजुअली टिपिकली जो मैंने क्या देखा है कि 10% क्वालिफाई हो जाते हैं, क्वालिफाइड लीड्स। सो 1000 में से आपके पास 100 क्वालिफाइड कॉल्स आ जाएंगी, जहाँ पे पहले सिर्फ 20 आ रही थी, कॉल टू एक्शन लिया, अब वो 100 हो गई हैं। सो अगर 100 में आप 30% को भी क्लोज करते हो या 20% को भी क्लोज करते हो, सो नाउ यू हैव 20 क्लाइंट्स फ्रॉम द सेम 1000 लिस्ट, whereas previously अगर आपके पास ईमेल लिस्ट थी, आपने 1000 को सेंड किया, सिर्फ 20 कॉल्स आई, उसमें पता नहीं अब कितनी कॉल्स बुक होंगी, क्योंकि वो डायरेक्टली सिर्फ एक मैसेज से आ रहे हैं, वर्सेस अपॉइंटमेंट सेटर उनसे पूछेगा चीज़ें, उनको क्वालिफाई करेगा। सो इवन जो 20 आपके पास लीड्स ईमेल मार्केटिंग से आ भी रही है ना, वो क्वालिफाइड नहीं है, मे बी उनमें से आधे अनक्वालिफाइड हो। So do you see like email marketing is not a good, I think initial question पे जाता हूँ, what's the best way to do lead gen? If you're just relying on cold outreach, I would much highly recommend एक तो LinkedIn, LinkedIn पे open rate ज़्यादा अच्छे होते हैं, या तो कोई appointment setter को आप मे बी कमीशन बेस के ऊपर ढूंढो एंड जस्ट गिव देम दैट लिस्ट, दे विल कॉल देम। थोड़ी बहुत आपको स्क्रिप्ट देनी पड़ेगी उनको कि क्या बोलना, क्या है एग्जैक्टली आपकी ऑफर क्या है। ऑफर अगर आपको नहीं पता, मेरा वेबिनार करें, आपको समझ आ जाएगी एग्जैक्टली ऑफर बनाते कैसे हैं। उससे जो है वो लोग अट्रैक्ट होंगे, उससे जो है लीड्स बेसिकली इंटरेस्टेड होंगे। अगर आपके पास ऑफर नहीं है एंड अपॉइंटमेंट सेटर उनको कह रहे कि हम आपकी वेबसाइट्स बनाएंगे या एड्स करेंगे, इट्स नॉट गोना गिव यू एनी ट्रैक्शन।
So don't even bother at that point. So create an offer, get an appointment setter on commission only, and give them that list. That would be my favorite one. Good. We have other questions as well. Okay. Um, अच्छा, I'm gonna go through the questions really quickly. मैं I think काफी लंबे लंबे आंसर दे रहा हूँ. सो निज़ाम के पास आते हैं एंड अनम फिर मे बी हम अगर इंस्टाग्राम और उधर से कोई आए हुए हैं तो आप वो भी पूछ सकते Yeah, हैं. yeah, सो दिस इज I'm अच्छा sorry. Yeah, this is Nizam. I have been in the Amazon PPC space since 3 years. I have been worked with several PPC agencies. Okay. Good, Nizam. Since previous December, I'm working with my own client. I have 3 clients which pay me around 3K per month each. Okay. Micro agency is called 10x advertising. I'm unable to scale it to 10K per month. My Upwork account is suspended. I was top rated. Now I want to not depend on any freelance marketplace. Okay, so where should I focus to scale? I'm stuck with my agency day-to-day operation as well. I'm involved in each and every task. Nizam, as I mentioned, and ये होता है, it's sucks to hear this, लेकिन हमारे साथ भी फाइवर के ऊपर exactly same ही चीज़ हुई थी. It can go down, right? Marketplace के पास power होती है. आपका account suspend हो गया, you can't do anything. So, hopefully my previous answer also gave you some ideas. Cold outreach कैसे करनी है. लेकिन अगर आपके पास already clients हैं ना, and आपने उनको successful बनाया हुआ है, make case studies out of them, reach out to other agencies, and just say कि यार हम आपके लिए एक client free of cost. We just want to show you कि what we can do. ये देखें case studies. Look at this client. हमारे पास आया, ये तब 10,000 पर मंथ कर रहा था, हमने इसको 100K पर मंथ पे स्केल किया. And how did we do it? This is what our strategy was. If you're interested, give us one account. We can talk about it on a call. हम आपके लिए एक अकाउंट पूरे मंथ में we'll just do it for free. We won't charge you. We're that confident कि हम 30 days या 60 days के अंदर let's say 30% revenue उसका increase कर देंगे. तो आपने कोई एक बोल्ड स्टेटमेंट के साथ जाना है. सो 3 चीजें हैं जो कि एक दूसरी एजेंसी इंटरेस्टेड होती है. लेट्स से मुझे कोई रीच आउट करता है, व्हाट विल आई लुक एट व्हेन आई एम कंसिडरिंग कि क्या मैं इस एजेंसी को आउटसोर्स करूं या नहीं. नंबर 1, हैव दे डन इट बिफोर? वो आपकी केस स्टडी में शो होगा. ठीक है. नंबर 2, व्हाट कैन दे डू फॉर माय क्लाइंट्स? वो आपके ऑफर में शो होगा कि हम 60 डेज में 30% रेवेन्यू इंक्रीज कर देंगे, जो भी आपका क्लेम है. नंबर 3, कि क्या इन लोगों ने प्राइसिंग ऐसी रखी हुई जो मैं अफोर्ड कर पाऊँ? इज़ दैट गोना बी सस्टेनेबल फॉर मी? तो क्योंकि आप उसको फ्री में ऑफर कर रहे हो, इट्स जस्ट गोना बी अ नो ब्रेनर ऑफर. तो आप अगर 100 एजेंसीज को रीच आउट करोगे, आई कैन गारंटी यू 2-3 एजेंसीज आपको काम देना शुरू कर देंगी. एंड इफ यू कैन प्रूव टू दैम यू कैन डिलीवर रिजल्ट्स, ट्रस्ट मी, आपका 10K क्या 30, 40, 50K पर मंथ. हमारा जो टॉप एफिलिएट है वो हमें 60,000 पर मंथ का बिजनेस देता है. Just to let you guys know. Okay, Anam, do we have any questions on Insta? no, we don't have any questions on Instagram, but we have few other questions over here. I want to Okay. target US audience to sell them psychological service. Which platform ad suits me? Okay, sorry, I was Um, kind of looking for that. दोबारा एक दफा repeat करना. I want to target US audience to sell them psychological services. Which platform ads suits me? Okay. It really depends. I'm not sure what psychological services mean. तो आप दोनों को यूज कर सकते हैं. गूगल, फेसबुक. डू यू हैव अ गुड वेबसाइट? सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा, डू यू हैव अ गुड वेबसाइट जहाँ की पे आपने रिजल्ट्स शेयर किए हुए हैं, आपके पास ऑफर उसके ऊपर है? इफ यस, देन यू कैन ट्राई आउट गूगल एड्स. गूगल एड्स थोड़े महंगे पड़ते हैं बिकॉज कॉस्ट पर क्लिक जो है ना वो काफ़ी हाई है. सो इट रियली डिपेंड्स. आई डोंट नो व्हाट साइकोलॉजिकल सर्विसेज मीन, लेकिन आप उधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं. अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम से स्टार्ट करना है, you have to go with a VSL. If you don't know what a VSL is, I have done a video on YouTube for it. Go check it out. Will be really helpful for you. And I think you answer how to start with developing an ideal customer persona for Amazon sellers. In This is a Apollo. Facebook. Yeah. Uh, yeah. For Amazon sellers in Apollo,
इट्स थोड़ा टफ होता है लिंक्डइन के ऊपर अगर आप कर रहे हैं ना। अब आई डोंट नो विद अपोलो वेयर यू आर टारगेटिंग देम, बट इफ यू आर डूइंग इट थ्रू लिंक्डइन, यूजुअली हम कीवर्ड बेस्ड जो है ना वो चीज़ें उठा रहे होते हैं। लेट्स से अमेजोन एफबीए जहाँ पे कीवर्ड है, अमेजोन सेलर्स, अगर उन्होंने मे बी कोई ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं जहाँ से हम स्क्रैप कर सकते हैं। तो यूजुअली क्या होगा, आप जब स्क्रैप करोगे तो काफ़ी आपके पास एजेंसी, सर्विस प्रोवाइडर्स, फ्रीलांसर्स भी उसके अंदर आएंगे, विच इज़ ओके। समटाइम्स यू डोंट नो, यू कैन रीच आउट टू देम। हो सकता है कोई वाइट लेबल पार्टनरशिप ही बन जाए। तो अभी हमने जब 3 मंथ्स, आई थिंक 4 मंथ्स हो गए हैं, हमने अपना लिंक्डइन आउटरीच प्रोग्राम स्टार्ट किया यूजिंग अपोलो, एंड इट वाज सरप्राइजिंग कि पहले 2 क्लाइंट्स हमारे पास अमेजोन सेलर्स हैं, बट देन द नेक्स्ट 2 क्लाइंट्स वर बोथ एजेंसीज, एंड हम उनको टारगेट भी नहीं कर रहे थे, बट क्योंकि हर एक को हमने रीच आउट किया, वो पर्सोना ही हमने ऐसे डिफाइन किया था। What ended up happening is they were like, "Hey, listen, can you extend the same offer to us?" And we were like, "Yeah, but the only thing is कि pricing ज़्यादा अच्छी होगी." They're like, "अच्छा, okay, we want to love, like we want to know more." So उनके साथ calls arrange हुई, and we ended up starting to do business with them. Already एक ने, अच्छा हम अब ये भी देखें ना आप, economics को देखें। जो हमारे पास उधर सेटर और क्लोजर की टीम है जिस लिंक्डइन के ऊपर जो काम कर रही है, रफली हमारी कॉस्ट आ रही है उसके ऊपर अराउंड 6,000 पर मंथ। एंड यूजुअली जब आप कोई चीज़ इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे होते हो, बहुत डिफिकल्ट होता है उसको बजट देना। सो आई वाज रियली स्केप्टिकल, आई वाज स्केयर्ड कि यार 6,000 पर मंथ मैं दे रहा हूँ, और ये मुझे कह रहे हैं कि तीसरे चौथे मंथ में कई रिजल्ट्स आने शुरू होंगे। सो लकीली हमारे पास दूसरे मंथ में ही क्लाइंट क्लोज हो गए थे, बट वी वर स्टिल नॉट ब्रेकिंग इवन। जब तीसरे मंथ में हमने ये 2 एजेंसीज क्लोज की, जो पहली एजेंसी थी, उन्होंने एक टेस्ट ऑर्डर किया व्हिच वाज लाइक $1,500, एंड राइट अवे उसके बाद दूसरा जो उन्होंने ऑर्डर दिया वो $10,000 का था। सो जितनी हमारी वो पेमेंट्स थी ना पिछली वाली, वो सारी पॉजिटिव में आ गई। सो दैट्स द पावर ऑफ लाइक क्रिएटिंग अ लीड जेन सिस्टम के एक दफ़ा वो चल पड़े। आप लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं कि कौन सा लीड जेन सिस्टम सबसे इफेक्टिव है। इट्स लाइक एनी लीड जेन सिस्टम इज इफेक्टिव, लेकिन व्हाट यू गाइस डू इज यू एंड अप गिविंग अप बिफोर इट इवन स्टार्ट्स वर्किंग। वो एजेंसी सक्सेसफुल होती है जो वेट करती हैं फॉर इट टू बिकम सक्सेसफुल। देयर इज लिटरली टू वेज यू कैन गेट अ लीड जेन सिस्टम गोइंग। या तो आपने पेशेंस शो करनी है विद अ कोल्ड लीड जेन सिस्टम जहाँ पे यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग, आप अपने एफर्ट्स के थ्रू टाइम लगा के आउटरीच कर रहे हो। या तो आप बस पे करो एंड यू गेट एन एक्सेलरेटेड पेस, बेशक वो पेड एड्स हैं या एफिलिएट्स हैं। इफ यू आर विलिंग टू पे समवन, इवन एफिलिएट्स, राइट? हमने टाटियाना जेम्स और कितने बड़े यूट्यूबर्स उनके साथ डील्स मारी हुई है, बट दे आस्क फॉर मनी। मतलब कभी 5,000 चार्ज करते हैं, कभी $10,000 चार्ज करते हैं फॉर व्हाट, जस्ट वन पोस्ट ऑन यूट्यूब। And there's literally two things: either you create your own system by being patient, वो तीसरे चौथे मे बी पांचवें मंथ में जाके वो ब्रेक इवन पे जाएगा, या तो फिर आप शुरू से पे करो and you'll start getting deals right away. Okay. We have a couple of more questions, Saddam, on Facebook. I hope you can see them. Yeah, so I'm gonna start reading those out too. Abdul Jabbar कह रहे हैं कि I have one client now, launch brand. It's now start. Okay, you know, it's a lot of time in making inventory and all. What's the next strategy you use get more clients? So अब्दुल जब्बार, ये वही लीड जेन वाली क्वेश्चन है। होपफुली मैंने कवर कर दिया उसको। बट जब क्लाइंट वेट कर रहा है फॉर द लॉन्च, यू रियली कैन डू एनीथिंग अनलेस यू कैन पिच देम सम अदर सर्विसेज दैट कम बिफोर द लॉन्च. What to look for when hiring a good Google ad expert? ओके, सो शेरान, जब आप हायरिंग कर रहे हो ना, आई थिंक जो सबसे क्रूशियल चीज़ है कि यू रियली हैव टू नो कि आपको उस बंदे में क्या एबिलिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। एंड हायरिंग इस तरह की चीज़ है ना कि हम अक्सर एक अच्छा इंटरव्यू करते हैं, हम कहते हैं यार यही बंदा है, मुझे बंदा मिल गया, बट डोंट डू दैट, डोंट रश इनटू दैट डिसीजन। जो आपका टीम मेंबर है, that needs to be a solid rock star. So take your time, try to post on all platforms so that you get enough resumes. अभी जिस तरह हम रियलिटी चेक के लिए हम जब एक प्रोग्राम पे जो काम कर रहे हैं उसमें मेंटर्स मुझे चाहिए। सो
आई एम लुकिंग फॉर लाइक द टॉप सेल्स पीपल इन पाकिस्तान जिनको मैं खुद ट्रेन भी करूंगा, बट आई वांट देम टू बी एट द टॉप, लाइक टॉप 1% को मैं टारगेट कर रहा हूँ. And I'm willing to pay. So number one, I'm showing them that I can pay, up to 10 lakh per month उनके लिए, right? So हमने range ही अच्छी रखी हुई है जहाँ पे we can attract good talent. Second चीज, I have given my HR team टारगेट कि मुझे 2000 एप्लीकेंट्स चाहिए, और पूरा कंसाइज टारगेट दिया हुआ है. 2000 एप्लीकेंट्स चाहिए, उसमें से रेज्यूमे स्क्रीन होंगे, हम टॉप 300 को सिलेक्ट करेंगे. वहाँ से फिर हम उनको प्री स्क्रीन कॉल्स करेंगे, उसके अंदर हम टॉप 70 को सिलेक्ट करेंगे. 70 कैंडिडेट्स को हम फिर ग्रुप इंटरव्यूज में स्केड्यूल करेंगे. दिस इज अ हैक आई एम शोइंग यू गाइस. अब अक्सर ओनर्स के पास टाइम नहीं होता टू डू अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज, बट इफ यू डू ग्रुप इंटरव्यूज, आप 5 कैंडिडेट्स को एक साथ ही इंटरव्यू कर सकते हो, एंड यू कैन फिगर आउट कि उनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है. सो उन 70 में से ग्रुप इंटरव्यूज करके हम टॉप 15 को सिलेक्ट करेंगे, एंड देन फ्रॉम देयर आई एम गोइंग टू गो विद द टॉप 10. So that's my strategy. So have more resumes, have a good HR system, and be willing to pay more. I think that's what the recipe is to get a really good candidate. But एक दफा कोई superstar आ भी गया आपकी टीम में, doesn't necessarily mean कि they're gonna work really well. आपको उनके लिए ट्रेनिंग और कल्चर और सब कुछ राइट अवे प्लान करना पड़ेगा. इफ यू डोंट हैव दैट, एक रॉक स्टार भी आके ना वो भी लेजी पड़ जाएगा या वो भी बैड हैबिट्स क्रिएट कर लेगा, क्योंकि it really depends on the culture of your company. So hopefully that helps. I'm going to move on to Hamad's question. What would you do, or what would you say about Facebook clients? I'm getting many clients which have almost dead listings of Amazon. Should we continue on that type of listings? And you have mentioned about percentage of revenue by PPC. If listing is like dead, then which type of deal should we do? Agar listing dead hai, I would only do a retainer type package. Yeah, I would do, a percentage of ad spend with a minimum billing. So let's say percentage of ad spend मैंने रखी हुई 20% of ad spend या 25% of ad spend, but मैं उनको साथ में ये भी क्लियर कर देता हूँ कि मिनिमम जो बिलिंग है ना वो 500 होगी, उससे नीचे नहीं होगी. तो अगर परसेंटेज ऑफ एड स्पेंड किसी महीने आप आउट ऑफ स्टॉक चले गए या आपने अपना एड स्पेंड ही कम कर दिया, इट डजंट मीन कि हम भी कम कमाएं. सो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मिनिमम एक चार्ज आपका होना चाहिए, एंड ऑलवेज हैव क्लियर एक्सपेक्टेशंस विद द क्लाइंट्स. जब ऑनबोर्डिंग कॉल हो ना, उसके अंदर ही आपने कहना है कि दिस इज गोना बी अ ट्रबलसम अकाउंट, बहुत टफ अकाउंट है, हियर्स आवर स्ट्रेटजी व्हाट वी आर गोना डू. एंड अगर काम ना की तो आपको इस पहले मंथ के अंदर ही पता लग जाएगा, वी लेट यू नो. सो दैट वे द क्लाइंट नोस के वाकई में इट्स लाइक अ टफ impossible challenge almost to turn this account around. दोनों जगह आप जीतते हो. अगर तो क्लाइंट का अकाउंट चल पड़ा, देयर गोना बी सो हैप्पी, क्योंकि उनको पता था कि ये डेड अकाउंट है. अगर नहीं चल पड़ा, हे लिसन, आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग दिस वाज गोना बी टफ. जिस तरह एक डॉक्टर आपको नहीं कहता कि यार थर्ड स्टेज ऑफ कैंसर है, हम अपनी ट्राई करेंगे लेकिन बाकी सब अल्लाह के हाथ में. सो पहले से ही अगर क्लाइंट को पता हो, जिस तरह पेशेंट को पता होता है, it makes it so much easier when you can get the results. But yeah, billing wise, just stick to like fixed. Okay, एक और question है. What strategies do you use to hire, monitor remote designers, website developers, SEO experts, etc., and how to set their KPIs? Yeah, okay. So this one is इसके ऊपर काफी लंबी बात भी चल सकती है. But how do you set KPIs? अभी सेल्स हर किसी की होती है ना, सो मे बी आई कैन डिफाइन इट इन सेल्स बिकॉज दैट्स कैन बी एप्लीकेबल टू एवरीवन. लेट्स से अभी हमारे पास सेल्स है ना, सेल्स के डिपार्टमेंट है. आई डोंट हैव टू बी इन्वॉल्व्ड इन माइक्रो मैनेजिंग देम कि यार तुमने घंटे पूरे किए नहीं किए. नो, आई डोंट इवन नीड टू सी के तुमने आज कितनी कॉल्स ली. दैट्स नॉट. आई एम जस्ट चेसिंग कि यार तुमने टाइम लगाया या नहीं है. जो अच्छा परफॉर्मर है, हो सकता है वो सिर्फ 3-4 घंटे ही लगा रहे हो. इट्स ओके. यू जस्ट हैव टू बी फोकस्ड ऑन मुझे रिजल्ट्स क्या मिलने चाहिए, और वही रिजल्ट्स जो हैं दे बिकम योर केपीआईज. सो सबसे पहली चीज, क्लाइंट का शो अप रेट कितना था. अगर तो वो 80% से लेट से नीचे है, मतलब 4 आउट ऑफ 5 क्लाइंट से अगर कम लोग कॉल पे आ रहे हैं जो कि ऑलरेडी स्केड्यूल हो चुके हैं, देयर इज अ प्रॉब्लम. या तो
मेरा सेल्स वाला उनके साथ सही फॉलो अप नहीं कर रहा है या उनको लिंक सही नहीं सेंड कर रहा, कुछ ना कुछ इशू है। ओके, सेकंड चीज़ के क्लोजिंग रेट उसका कितना है कॉल के ऊपर। हमारा तकरीबन अराउंड 60-65% होता है। जो कॉल्स बुक्ड हैं, जो जिन्होंने शो अप किया, 65% ऑफ द टाइम वी शुड बी एबल टू क्लोज देम, दैट्स 2/3। अगर उससे कम है, अगेन कुछ ना कुछ हो रहा है। या तो कन्विक्शन उसकी लूज़ होगी, सेल्स वाला बंदा सही पिच नहीं कर रहा, देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन, सो वी नीड टू फिक्स दैट। तीसरा, एवरेज बिलिंग होगी कि अगर एवरेज बिलिंग हम टारगेट करें कि 2500 हर एक डील में से आनी चाहिए, लेकिन एवरेज बिलिंग में भी 1500 होगी। अभी लास्ट मंथ ही यही हुआ था। वी लुक्ड एट द स्कोर कार्ड, एक बंदे का क्लोजिंग रेट जो है वो 70% पे पहुंचा हुआ है। आई वाज लाइक दैट्स, क्या कमाल कर रहा है ये। एंड जब हमने उसका एवरेज बिलिंग देखा तो वो अराउंड 1600 थी। हमारा टारगेट 2500 होता है। सो वो कर क्या रहा था कि ज़्यादा डील क्लोज करने के लिए उसने अपनी एवरेज बिलिंग कम कर दी, लोगों को डिस्काउंट दे रहा था। दैट्स हाउ यू फिगर आउट के क्या इनएफिशिएंसीज हैं, कौन सही काम कर रहा है, किसको कहाँ पे पकड़ना है। सो यू आर नॉट बीटिंग देम ऑन द टाइम, यू आर आस्किंग देम अबाउट परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द केपीआईज। क्या मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, दैट बिकम्स योर केपीआईज, कौन से रिजल्ट्स आपको चाहिए। So hopefully that answers. एक और क्वेश्चन लूंगा, we'll come back to questions in the end. एक और क्वेश्चन लूंगा, then अनम क्या ख्याल है, हम अनाउंसमेंट कर दें उसके Yeah, बाद? I think Jameel Iqbal ka, and then we can come back. We have another question from Sharan, so we can go back to Sharan's question. Sounds good. So Jamil is saying, how can I assemble a high performing team for a digital agency that delivers value to both clients and the agency itself, ensuring team members are actively engaged in the overall mission and aligned with agency objectives rather than just performing tasks? I think आपने अपने क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया. What is your mission? What's your values? Does your team know that? क्या उनको पता है कि आप किस चीज़ के पीछे हो? Do they know their why? Why should they work for you in an efficient manner? If you set the objectives, if you set the mission, if you set the values, it should go from top to bottom. हर एक बंदे को पता होना चाहिए उसका गोल क्या है और उसका रोल क्या है। ये मैंने एक यूट्यूब वीडियो में सुना था, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी थी कि गोल क्या है एंड रोल क्या है, ये 2 चीज़ें उनको 100% ऑफ द टाइम पता होनी चाहिए। And then it just comes down to के can you afford a high end superstar in your team? क्या आप सुपरस्टार्स की टीम अफोर्ड कर भी सकते हो? अगर तो यस, पे देम, पे हाई एंड गेट अ रियली गुड एचआर पर्सन। मे बी आप रिक्रूटमेंट एजेंसी से भी एक डील कर सकते हो कि मुझे जो टॉप डिजिटल एजेंसीज हैं उनमें से बंदे अप्रोच करके दो। That's the best way to get them. But if you don't have a high budget, then you need to, it's a ट्रेड ऑफ, या तो आपको टाइम देना पड़ेगा या पैसा देना पड़ेगा। अगर पैसा नहीं है आपके पास, देन आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको अपनी रेसिपीज बनानी पड़ेंगी, आपको अपने एसओपीज बनानी पड़ेंगी, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस प्रोसीजर्स होते हैं। एंड मेनली इट्स लाइक डॉक्यूमेंटेशन, कि मैंने डॉक्यूमेंट कर दिया कि हर एक स्टेप ऑफ द वे मैंने ये चीज़ें करनी है। लेट्स से आपकी सर्विस कुछ भी होती है, 4-5 स्टेप्स होते हैं उसके अंदर। हर एक स्टेप को प्रॉपर्ली आपने डिफाइन करना है, उसको लिख देना है कि एंड देन ट्राई टू रेप्लिकेट इट। जस्ट लुक एट दैट डॉक्यूमेंट एंड आपने अपने आप को कहना है मुझे कुछ नहीं आता, मैं सिर्फ इस डॉक्यूमेंट को फॉलो करूंगा एंड लेट मी सी इफ आई एम एबल टू बी सक्सेसफुल। एंड इफ यू कैन डू इट, दैट्स परफेक्ट, आपके पास एसओपी बन गई। अब वहां से आपने एक लूम वीडियो, लूम इज अ ग्रेट सॉफ्टवेयर, लूम वीडियो आप ओपन करो एंड जस्ट स्टार्ट डूइंग अ वीडियो एंड रिकॉर्ड दैट, क्योंकि लोग जो है वीडियो से ज़्यादा अच्छा सीखते हैं। एंड दैट बिकम्स योर डॉक्यूमेंट। उसी रेसिपी को आपकी टीम वाले भी फॉलो करेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर नहीं होंगे। एंड वन लास्ट थिंग दैट यू कैन डू आफ्टर, कि डॉक्यूमेंटेशन तो आपकी होगी, आपके प्रोसेस बन गए, लेकिन दैट डजंट मीन कि हर दफ़ा प्रोसेस प्रॉपर्ली गो थ्रू होगा। हो सकता है कोई ऐसा चैलेंज आ जाए जो कि प्रोसेस में कवर्ड ही ना हो। सो उसके लिए आपने डेली मीटिंग्स वगैरह कर दी ना अपनी टीम के साथ। हर दिन आप कॉल पे आओ, उनकी हेल्प करो एंड यू विल सी आपकी रॉकस्टार की टीम खुद ब खुद बन जाएगी। All right, so I think it's time now for the big announcement. यस, Should I यस, go it is for time. a
full screen for the presentation or the screen, or Please you want do. to be? Yeah, please do. Yeah, I will wait for the full screen. Um, Perfect. And guys, okay, so before I announce, I do want to just go through a few things, just a few screenshots. Uh, अभी even though हमारे पास कोई formal program कुछ भी नहीं है, I am just amazed at the messages. I just wanted to show you a few things. You know, कुछ कुछ messages मुझे आते हैं. इस बंदे को मैंने suggestions दिए. He was a good friend of mine, and he was like, "Thank you for your suggestions. They've actually helped us improve the quantity of patients." सिर्फ paid ads वो कर रहा था. थोड़े बहुत मैंने उसको suggestions दिए, and he was able to get results. Okay. This is another example. First high ticket close किया इसने. 6 months की commitment, around $1,500 per month पे close किया. And he's like, I'm good at closing. Love that. You know, I love seeing messages like that कि मेरे free YouTube content जिसमें मैंने अभी तक properly recipes को define भी नहीं किया, उससे आप लोगों को रिजल्ट्स मिल रहे हैं. दिस इज अमेजिंग टू हियर. सो अ फ्यू मोर दैट आई हैव. यहाँ पे एक और बंदे ने मुझे मैसेज किया हुआ था व्हाट्सएप के ऊपर ही कि आई क्लोज्ड अ क्लाइंट $2,000 on monthly retainer. Earlier this month I closed another $2,500 per month retainer. Few months back I had lost a client जो 3,000 दे रहा था. So ये 4,500 एक्स्ट्रा उसने ऐड किया है इन बिलिंग. अमेजिंग रिजल्ट्स. एंड कल ही मुझे अपने वीडियो एडिटर से, जिसको अभी हम अपना प्रोग्राम जो है ना क्रिएट, उसका कंटेंट क्रिएट करके वो मैं एडिट करवा रहा हूँ. सो जस्ट बाय फॉलोइंग सम ऑफ दोज स्टेप्स ही was like, I closed 2 clients, 3,000 per month and 2,000 per month, and things are finally working out. आप ये सोचें कि ऐसा एक यंग लड़का, आई थिंक ही इज ओनली 19 और समथिंग, यंग लड़का जो कि 50,000 रुपीज पर मंथ सिर्फ कमा रहा था, जस्ट ऑल ऑफ अ सडन क्लोज $5,000. कितना बनता है? तकरीबन 13 lakhs पर मंथ. 50,000 से 13 lakhs पर मंथ, just by going through that content, क्योंकि इसको right away access मिल गई है मे बी, because it's not out there. This is just content that I've recorded, and it's going to be released inshallah in the next year. So it's amazing to see this. अगर आपके पास भी इस तरह के रिजल्ट्स हैं जो मेरे डायरेक्ट कंटेंट से आपको हेल्प हुई है, प्लीज आप मेरे साथ शेयर करें. आई लव सीइंग दीज थिंग्स एंड इट रियली मेक्स मी हैप्पी. एंड लास्टली मैं आपके साथ हमजा की भी स्टोरी शेयर करूंगा, जिसने अभी जो हमारा मॉडरेटर भी है, and he actually hit his own sales record. So I will share that, but you know, before anything, I want to share with you guys the main basic news announcement. So I think about a month and a half, तकरीबन 1.5 महीना पहले मैंने एक के ऊपर पोस्ट शेयर की थी कि अगर हम कोई कॉन्फ्रेंस करें, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो आपको कौन से स्पीकर्स जो हैं वो कॉन्फ्रेंस पे देखते हैं. काफ़ी लोगों ने पोस्ट किया, सो आई रियली अप्रिशिएट द चैनल, द सजेशंस, but I wanted to make this true. So finally, without further ado, you know, we are having a conference, inshallah, next year in January, and it's going to be called Reality Check Growth Conference. I just want you guys to know कि कोई भी चीज़ आपको जो helpful लगती है, I want to make that a reality for you guys. So ये हमारी पहली कॉन्फ्रेंस होगी और जनवरी 14 को हो रही है. हमने वेन्यू जो है पीसी लाहौर चूज किया है इसके लिए. ओके, सो अभी ऑफिशियली हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं, बट नेक्स्ट वीक से हम टिकट्स को भी लाइव कर देंगे. और इंशाल्लाह एक दिन की कॉन्फ्रेंस है, साथ में वीआईपी डिनर भी है फॉर वीआईपी पास होल्डर्स. रीजन वी आर डूइंग दिस इन लाहौर, एक्सक्यूज मी, रीजन वी आर डूइंग दिस इन लाहौर इज ताकि बाकी लोगों को भी डिफरेंट सिटी से एक्सेस मिल जाए. अनफॉर्चुनेटली कराची वालों के लिए मैं बहुत करना चाह रहा था, लेकिन कराची बिल्कुल अलग मुल्क है. तो कराची में इवन तो मेरा अपना ऑफिस है एंड आई लव गोइंग देयर. द रीजन आई वांटेड टू चूज लाहौर इज बिकॉज इस्लामाबाद और मुल्तान और इन सारी जगहों से, इवन पेशावर से लोग लाहौर तक आ सकते हैं ना फॉर दिस 1 day conference.
and I'm just gonna show you guys the speakers in a bit. आप लोगों की suggestions के through ही I was able to select and find these speakers just to show you guys कि I can get any speaker. हमारे पास सारे स्पीकर्स की एक्सेस है, हमारे पास बड़ा अच्छा नेटवर्क है, एंड इंशाल्लाह ये पहली कॉन्फ्रेंस है, इसको अगर हम सक्सेसफुल बनाएंगे, इतनी वैल्यू पैक मैं इसको बनाना चाह रहा हूँ कि हर कोई जो उधर आए उनको बड़ी इमेंस वैल्यू मिले जस्ट बाय वेबिनार। अगर मेरे वेबिनार को गो थ्रू करके लोग 5-10,000 डॉलर्स क्लोज कर रहे हैं, इमेजिन बीइंग देयर एट द कॉन्फ्रेंस और वहाँ पे हम लाइव सेशंस और स्पीकर्स और ये सारी चीज़ें कर रहे हो, आप लोगों को बहुत वैल्यू मिलने वाली है। सो द रीजन फॉर डूइंग दिस इज सो दैट वी कैन क्रिएट एन इंडस्ट्री ऑफ a network of industry leaders और entrepreneurs जो कि डिजिटल इंडस्ट्री को वाकई में टक्कर दें। एंड आई रियली मीन दैट, आई रियली थिंक टाइम आ गया है कि जो हमारी फ्रीलांसर्स की बड़ी मार्केट है ना, इन लोगों को डायरेक्शन नहीं मिल रही थी, बट I have access to the biggest speakers, the biggest coaches, the biggest mastermind hosts, everything. मैं उनका पार्ट भी हूँ। अभी कल मैं एक mastermind ग्रुप के कोचिंग कॉल के ऊपर था। जिस बंदे ने 9 फिगर एजेंसी चला रहा था, उसने एलेक्स हरमोजी को अपना कोर्स बेचा। That's how big he was. लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये पब्लिक के पास नहीं होती। We're paying a lot of money to get access to that. So हमारा विजन क्या है कि एक हमारी डिजिटल ट्राइब भी बन जाए एंटरप्रेन्योर्स का, एंड द मिशन इज टू इंस्पायर, एजुकेट एंड एनेबल ऑल द फ्रीलांसर्स इन एजेंसीज इन पाकिस्तान कि वो अपना $1 मिलियन का ड्रीम रियलाइज करें, एंड इंशाल्लाह हम हर एक को उधर पहुंचा देंगे। दैट्स द गोल, बट आप लोगों की तरफ से भी एक कमिटमेंट चाहिए। अगर तो आप अभी 10,000 से नीचे हो, जस्ट गेट टू 10,000 फर्स्ट। अगर लेट्स से 10,000 कर लिया, द नेक्स्ट गोल इज टू गेट टू लाइक 25,000, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके you get to that 80,000 per month, which will get you to 1 mil per year. Okay, and थोड़ा बहुत हमने अपना कम्युनिटी के बारे में बताया हुआ है, एंड दिस इज आवर फर्स्ट कीनोट स्पीकर। सो आई नो हमारे बहुत से जो फॉलोअर्स हैं, जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं, वो अमेजोन स्पेस से हैं, एंड आई डोंट नो इफ यू गाइस नो दिस, बट ब्रैडली इज अ प्रीटी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो ब्रैडली को मैंने कहा यार तुम्हें पाकिस्तान आना पड़ेगा, एंड बिकॉज ही लव्स पाकिस्तान he said yes to it. So he will be coming. Inshallah, he will be the speaker at our conference. And then VIP dinner में भी he'll be there. तो जो भी हमारे पास VIP जो pass holders हैं, वो उसको personally मिल भी सकते हैं, उसके साथ थोड़ा network भी कर सकते हैं. He's going to be there, staying in Lahore, staying in PC. So that's our first speaker. Second one, हिशाम सरवर, ऑफ कोर्स। ये दोनों सजेशंस जो थी ना, हमारे पोस्ट पे आई थी, जब मैंने कहा था कि हाइपोथेटिकली अगर हम कोई कॉन्फ्रेंस कराएंगे तो आपको कौन से स्पीकर्स चाहिए, जो सबसे ज्यादा नाम आ रहे थे वो ब्रैडली और हिशाम सरवर के आ रहे थे। So I wanted to have Hisham Server on this conference as well, and he's going to be there um, at the conference as one of the speakers. And तीसरा जो है, again we have from the Amazon space, उज़ैफ़ा अली जो है वो भी keynote speaker हैं। अभी हमने साथ में और भी बड़े speakers already close कर दिए, उनसे बात चल रही है आहिस्ता आहिस्ता। So in the next 1 week or so, वो लोग भी they'll be published in our deck. So then वो send out the announcements, साथ साथ हमारी marketing messaging भी शुरू हो जाएगी। So हमारे पास लाइनअप बड़ी अच्छी बन रही है। हम क्या करेंगे, एक तो मेन स्टेज होगा, थोड़ा मैं आप लोगों को पोटेंशियल भी बता दूं कि फ्रीलांस का पोटेंशियल, आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस अ लॉट। अभी सिर्फ 1 बिलियन की कंट्रीब्यूशन है, वी वांट टू गेट दिस टू इजीली लाइक 2 बिलियन तक तो हम टच कर सकते हैं, अगर हमारे कम्युनिटी में से ही सिर्फ 1,000 लोग ऐसे निकल आए जो $1 मिलियन की एजेंसीज क्रिएट कर लें। वी ओनली नीड 1,000, बट हम आहिस्ता आहिस्ता इसको डेवलप करेंगे। It's a $9 trillion agency by 2030. So there's huge potential. हमारे पास उसमें बहुत छोटा पीस है in Pakistan. So we have to slowly increase this. बस हमारे पास कोई base नहीं थी अभी तक. And we're just creating that base with this community. पहले हमने लाइव शुरू किए, फिर हमने कोचिंग कॉल शुरू किए, साथ में मास्टरमाइंड ग्रुप शुरू किया, अभी ये कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। इसके बाद मेरा गोल है इंशाल्लाह कि मैं इन सिटी मीटअप्स शुरू करूं।
So this is going to start taking momentum. मैं जब 2 महीने के लिए पाकिस्तान आऊँगा, I want to be at every city. मैं आप सारों से मिलना चाह रहा हूँ. So it's going to be amazing. But if you get a chance, I want you all to be at the conference. हमारे पास थोड़ी limited capacity है. So we've got about 1,000 to 1,200. तो काफ़ी limited है. We wanted to have it bigger, लेकिन it's just the first one. इसलिए हम थोड़ा छोटे से start कर रहे हैं. But I can imagine कि 1,000 की capacity we'll be able to hit with all the interested people in our community. And ये एक रफ हमारे पास फ्लोर प्लान भी उसका बना हुआ है. सो हमारे पास ये पूरा एक मेन ऑडिटोरियम होगा जहाँ पे अराउंड 500-600 की सीटिंग होगी. एंड देन वी हैव दीज बूथ्स जहाँ पे इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद एनी काइंड ऑफ लेट्स से सॉल्यूशंस, हमारे प्रेफर्ड वेंडर्स या कह दो स्पॉन्सर्स एग्जिबिटर्स जो हैं वो यहाँ पे आएंगे. साथ में फूड स्टॉल्स भी होंगे. वी हैव अ नेटवर्किंग एरिया, यहाँ पे छोटे मोटे सेशंस ट्यूटोरियल्स टाइप चल रहे होंगे. तो उनके लिए भी अभी हम आहिस्ता आहिस्ता स्पीकर्स और कोचेस जो हैं वो रीच आउट कर रहे हैं. सो these things will come in as we get more speakers and coaches lined up. But yeah, Anam, this was the announcement. I'm This is amazing. We are so, so happy that you're doing it. And I'm so happy for our Pakistani audience that they'll be able to experience something like that. क्योंकि जो speakers हैं, this is just the beginning, guys. I mean, there are so many more speakers coming up, and so proud of the work that this group is doing and what you're doing for the group as well. So I hope, yeah, we will have the tickets live. Actually, everybody's already asking about the tickets and everything. बिल्कुल. एंड आई रियली अप्रिशिएट जो हमारे एज आई मेंशन जो हमारे पास लोग हैं इस कम्युनिटी के अंदर या व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जो मेरे साथ ये स्क्रीनशॉट शेयर करें जो मैंने अभी दिखाए. क्योंकि दैट शोज मी कि मेरा कंटेंट कहीं ना कहीं पहुंच रहा है एंड लोगों को उससे बेनिफिट मिल रहा है. जो वाकई में Absolutely. कमिटेड हैं, देर एबल टू इंटीग्रेट दैट, इम्प्लीमेंट दो स्ट्रेटजीज. एंड आपके सामने ही है. अगर Yeah. एक यंग 19 ईयर का बच्चा 50,000 से 15 लाख पे पहुंच सकता है महीने के, जस्ट इमेजिन, राइट? आप अगर एक फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू जाते, इवन अनम अनम ने अपनी डेंटिस्ट्री छोड़ दी, यू नो. अगर आप लेट्स से डेंटिस्ट बनते एंड उसको परसू करते, अनम कितना टाइम लगता है 15 लाख पर मंथ तक पहुंचने के लिए? Oh, that would have taken around 15 years, maybe. 15 years. And this guy was able to do it in the age of 19. So that's the Yeah. potential. I do want to take a few more questions. लेकिन थोड़ा मैं आपको ना हमजा की स्टोरी भी बताऊं. सो हमजा, एज यू guys know, वो वन ऑफ द मॉडरेटर्स हैं. उसने more than $500,000 per year कमाया हुआ है just through Upwork. So he's top rated. And वो मेरे पास है कि और मेरे पास कोई लीड जेन के सोर्सेज क्या हो सकते हैं? व्हाट एल्स कैन आई डू टू इंक्रीज माय क्लाइंटेल, इंक्रीज माय न्यू सेल्स? एंड आई वाज लाइक, हमजा तुम अभी इस वक्त कितना रेवेन्यू कर रहे हो? ही सेड के अराउंड 25,000 पर मंथ. ओके, साउंड्स गुड. एंड यूजुअली न्यू सेल्स में तुम्हारे पास कितना आता है? सो ही सेड कि मोस्टली मेरे पास रिकरिंग है. न्यू सेल्स में इट्स ऑलवेज ऑन एंड ऑफ. कभी 5,000 भी आ जाता है, कभी कभार बिल्कुल जीरो सेल्स भी आती हैं. आई वाज लाइक, मेरे ख्याल से तुमने अपना अपवर्क मैक्स आउट नहीं किया. इवन दो तुमने कमाया हुआ है, बट वो सारा रिकरिंग रेवेन्यू से आ रहा है. व्हाट इज योर स्ट्रेटजी? हमने पूरा बैठ के उसकी अपवर्क स्ट्रेटजी देखी. ही वाज स्पेंडिंग $1,800 पर मंथ ऑन अपवर्क कनेक्ट्स. दैट्स हाउ मच ही वाज स्पेंडिंग. एंड कभी कभार जीरो सेल्स भी आती थी. बट Oh, द गुड थिंग फॉर हिम इज रिकरिंग था सारा. okay. That's we have done a video on that as well. What recurring वी डन clients as well. वीडियो. अच्छा, उसके साथ अनम मजे की बात ये, मैं बैठा एंड आई वाज लाइक, तुम मुझे अपना प्रपोजल दिखाओ. एंड वही जो मैं अक्सर कहता हूँ ना कि एक लंबी लिस्ट ऑफ सर्विसेज के हम एक्स वाई जी ए बी सी से शुरू करके जी तक पहुंचा देते थे. एंड आई वाज लाइक, हमजा इसको चेंज करना पड़ेगा. सबसे What your पहली next? चीज हम, या उसका हमने प्रपोजल चेंज किया. उसके बाद मैंने उसको कहा कि तुम अपने जो प्रपोजल वाले वीएज हैं उनसे किस तरह फॉलो अप्स लेते हो. तो वो पूरा हमने उसके लिए स्ट्रीमलाइन किया कि हाउ डज ही ट्रैक देयर वर्क, जो अभी केपीआईज की भी बात हो रही थी. एंड लास्टली उसके पास कोई फॉलो अप सिस्टम नहीं था. सो
वो अक्सर कभी फॉलो अप कर देते थे, कभी नहीं करते थे। सो हमने उसके लिए टेम्पलेट्स क्रिएट किए उसके साथ ही बैठ के। एंड मैंने कहा कि हमज़ा, हमें फॉलो अप्स के लिए प्रॉपर सिस्टम चाहिए। एंड ये सिंपल चीज़ें हैं, सिर्फ़ 3 सिंपल चीज़ें, प्रपोज़ल चेंज, वीएस से ट्रैकिंग प्लस फ़ॉलो-अप्स। But he was able to hit a record $10,000 in sales, 9,500 to be exact. लेकिन 10,000 उसने न्यू सेल्स में किया इस मंथ फ्रॉम $1,800 स्पेंड। अब उसका जो मार्जिन है ना, वो अराउंड 50% है। अगर उसमें से लेट्स से 10,000 में 5,000 उसका मार्जिन है, 1,800 कनेक्ट्स में चला भी जाता है, ही स्टिल हैज़ इनफ प्रॉफिट। सो अभी हम नेक्स्ट मंथ दोबारा इस चीज़ को रेप्लिकेट कर रहे हैं। मैंने कहा एक दफ़ा फिर हम 10K की कोशिश करते हैं, अगर तो चल पड़ा देन यू डबल द अपर कनेक्ट्स। 1800 स्पेंड करे थे, अभी 3600 स्पेंड करो। एंड वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि मेरा अपर कितना जूस निकाल सकता Okay, that's good. That's है। good. Okay, so we have few questions. I think we were left with Sharon's question. How do you retain top talent by incentivizing them and appraisals, however, also keeping the company's finance in line as well? Um, okay, that's a loaded question because it depends कि टॉप टैलेंट किस लेवल पे है। अगर तो वो बिगिनर लेवल पे है, I usually like to incentivize with either a bonus structure, या तो recently अभी मुझे अंदाजा क्या हुआ है कि you're better off not hiring someone full time but on project basis. That's been my recent realization. उसमें होता क्या है कि आप हमेशा ज़्यादा ही पे करते हो ऑन प्रोजेक्ट बेसिस, लेकिन वो दूसरा बंदा भी मोटिवेटेड होता है। सो सिंपल एग्जांपल है फोटोग्राफर्स की। एक फोटोग्राफर को हम रफली पे करते थे मे बी $20 एन आवर। सो इन अ मंथ्स टाइम अगर तकरीबन 200 घंटे होते हैं ना, तो $4,000 पर मंथ उनकी सैलरी जाती थी। बट वी रियलाइज के उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। वो मे बी उन 200 घंटों में 10 प्रोजेक्ट करें, कभी वो 15 भी कर सकते हैं। सो उनके ऊपर प्रेशर नहीं था और आहिस्ता-आहिस्ता जो है हमारा प्रोजेक्ट बैकलॉग क्रिएट होता जा रहा था। सो वी Okay. चेंज्ड देयर कॉन्ट्रैक्ट एंड वी सेड कि यार हम सैलरी नहीं देते। हाउ अबाउट वी गिव यू पर प्रोजेक्ट मनी। एंड इस तरह अगर आप इतने प्रोजेक्ट्स करोगे तो आप 4 के आप 6-7 हज़ार भी कमा सकते हो। अभी लास्ट मंथ बल्कि कंसिस्टेंटली लास्ट फ्यू मंथ्स जो हमारा टॉप फोटोग्राफर है वो 8,000 कमा रहा है। तो इफ यू थिंक अबाउट इट, वी आर पेइंग मोर, लेकिन वी आर पेइंग मोर फॉर देम टू डू मोर प्रोजेक्ट्स। तो जो जितना कर सकता है दैट्स परफेक्ट। एंड एट द एंड ऑफ द डे हमें तो यही देखना है ना कि पर प्रोजेक्ट हमारे पास कितना मार्जिन है, और उस हिसाब से हमने उसकी कॉस्टिंग करनी होती है। सो ये हमारे बिल्कुल जो मिड लेवल या बिल्कुल जो एंट्री लेवल के ऊपर है। जो टॉप लेवल आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं, इट रियली डिपेंड्स कि आप किस टाइप का प्लेयर लेके आ रहे हो। जो अच्छा टीम मेंबर होगा वो मे बी 4-5 हज़ार डॉलर भी ले सकते हैं। या पाकिस्तान की अगर एजेंसी है ना और पाकिस्तान के एम्प्लॉयज़ हैं, अगर डायरेक्टर लेवल या सीनियर वीपी लेवल टाइप इस तरह के लोग आप लेके आ रहे हो, तो उनको, या जनरल मैनेजर टाइप लेवल के, उनको 3 लाख इस तरह चाहिए होता है। सो फॉर देम इट्स लाइक बेस प्लस bonus type structure that you want to do, and bonus again should be tied to KPIs that we talked about. um, मैंने ये भी देखे हैं कि लोग अक्सर रेवेन्यू शेयर के ऊपर भी काम करते हैं। अगर किसी को आपने ऑलमोस्ट मिनी सीईओ ही क्रिएट करना है कि यार ये डिपार्टमेंट तुम संभालो। मेरे पास एक एजेंसी ओनर था, ही वाज सेइंग कि आई हैव 3 डिपार्टमेंट्स, मुझे समझ नहीं आ रही कि हर एक को मैं इक्वल टाइम कैसे दूँ। हाउ डू यू डू इट? आवर टीम हैज़ 9 डिपार्टमेंट्स। The only way I can do it is if I can trust one head or manager to completely manage that department for me. And I basically give them, a percentage of the growth or something like that, so that उनका भी incentive रहे कि इसको मैंने grow करना है। ठीक है, उसको जितने भी पैसे जाते हैं, वो बेशक 20 लाख क्यों ना कमा रहा हो, बट दैट मीन्स कि अगर वो 20 लाख कमाएगा तो उसकी वजह से मैंने शायद करोड़ कमा लिया हो। So that's the Okay. mentality you should have. Okay. So revenue based. We have another question after that as well. Okay, how much
charge per ASIN. If client said, I have a store. पर ASIN तो अब्दुल जब्बार आई डोंट थिंक कि पर ASIN आपको चार्ज भी करना चाहिए. It really depends के या ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर आप देखो या ओवरऑल अकाउंट के ऊपर देखो. डोंट डू इट पर ASIN. It's not a good system. Okay, and then I think we should come towards the last two comments. Okay. Uh, if possible, bring Junaid Akram, Ganji Swag to the conference. Do we have him Uh, on list? या सो जुनेद से बात हुई थी एंड जुनेद इंटरेस्टेड था आने के लिए बट ही सेड कि वो शायद पाकिस्तान में ना हो. सो आई वुड हैव लव टू ब्रिंग जुनेद. ही डिड से कि हम दिसंबर में बात करते हैं. ज़ाहिर है वो हाई प्रोफाइल बंदा है. ही सेड कि दिसंबर में बात करते हैं, अगर तुम्हें हुआ तो मैं आ जाऊंगा. तो हो सकता है वो लास्ट मिनट एक सरप्राइज एंट्री हो जाए. आई एम गोना ट्राई टू मेक दैट हैपन. All right. And there's another very interesting question. Do you want Which me? one? Yeah. Can you explain a bit more about the conference that the booth system is open to any agency? How is the networking group going to help participants? This is an interesting question. Bilkul, yeah. So the booth system is open to agencies that I would say can cater to and help freelancers in some shape or form. दूसरी freelancers या agencies को अगर वो help कर सकती हैं, definitely get in touch with us and we will talk about like the booth options. हमारे पास 4 different options हैं. So we can get you guys placed on what we feel. We'll recommend कि आपके लिए कौन सा सबसे suitable रहेगा. अच्छा, जो हमारे पास नेटवर्किंग एरिया है, वो मेनली हमने बनाया हुआ है क्योंकि जो मेन ऑडिटोरियम है, वो काफ़ी डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है। इफ देयर स्पीकर्स कमिंग इन और यूजुअली लोग उनको सुन रहे होते हैं। सो नेटवर्किंग एरिया हमने इसलिए बनाया हुआ है ताकि दूसरे फ्रीलांसर्स, एजेंसीज़ जो हैं, वो उधर आके आपस में डिस्कशंस करें और एक-दूसरे से सीखें। सो दैट्स गोना बी अ फन वन। वहाँ पे थोड़े हम एक्सरसाइज़ेस टाइप या सेशंस टाइप भी रखेंगे, जस्ट टू मेक इट मोर एंगेजिंग फॉर देम। All right. That's good. So we have another question from Instagram. Tips for people who are just starting off their business. What would you like to say? I think this is one question that every Pakistani wants to ask you, that what would you suggest? Market saturation, anything that you think has not been evolved yet in the market, what would you say? Yeah, there's a lot of tips, but the one tip is get your product right. And what I mean by that is, does your service really have something powerful? If not, keep going back to it. Um, Figure out कि competition क्या कर रहा है. Figure out what the beta testing clients soft launch करें. Just get opinions, get feedback on your product. जिस तरह एक कोई भी product launch होता है ना, लोग पहले surveys करते हैं, study groups होते हैं. You have to do the same thing. You can be doing the same kind of service जहाँ पे कोई differentiator ना हो and expect people to say यार मुझे इसके साथ ही काम करना है. No, you don't have anything special in that case. So in order to make it special, you really have to understand कि market में already चल क्या रहा है और लोग मेरे product को कहाँ पे rank कर रहे हैं. So that would be my only feedback for now. Get your product right. All right. Thank you so much, Saddam. And yeah, these are all the questions we have had up till now. And Okay. we really appreciate for the live session. And there's one more question actually. Display ads versus DSP advertising. Explain, please. Okay, so DSP is the demand side platform. ये थोड़ी Amazon वाली discussion चल रही है, Abdul. So I'm happy to explain it. Maybe this might not be the right format for it. So आप अगर हमारा offer वाला जो webinar वाला group है ना, उसको join करोगे, again the link is going to be posted. Anam will post it either today or tomorrow. Join that group and ask these kind of questions there. तो वहाँ पे मैं थोड़ा in detail जा सकता हूँ. But just to give you a quick example, जो स्पॉन्सर डिस्प्ले एड्स है वो आपके एडवर्टाइजिंग कंसोल में होता है. दे वर्क वेरी सिमिलर टू डीएसपी एड्स. डीएसपी में आपके पास थोड़े ज़्यादा एनालिटिक्स हैं, ज़्यादा लेवर्स होते हैं. एंड anyone who's not even selling on Amazon can also do DSP advertising. Plus, you can also advertise and get shown up on different apps if you do DSP advertising. So it works similar to
display ads, but it comes with a lot of more options. So I don't know at this stage आप लोगों के पास access भी होगी, because getting a DSP seat is a bit difficult. So अगर कोई extra आपके maybe specific questions हुए उसके ऊपर, you can ask in the group. One last question, actually, if you have time for that. Sure, let's do one last question and फिर inshallah we'll sum this Yeah. up. Okay. So we have one last question on a general. I think this is a good question as well. The whole world is facing a turmoil in economy. Do you think people are still looking to take service agencies to hire for their work, or do we change pricing of our service based on global trend? Mhm. You So want me to lead? give me any service Anam, कोई example दो. Mm, Anything you can think of. okay. Let's go for the food industry. Okay. So food industry में लोगों को भूख लगती है. Yeah. And it's a That never means ending it will book. work. That means it will work. It will work. बेशक बेशक लोगों के पास पैसे ना भी हो, as long as they get hungry, food service will always be needed. It's the Yeah. same with any kind of industry. As long as people need that service, अगर वो उसकी need shrink नहीं हो रही, regardless of what's happening with the economy, there's always ways to sell that. You just need to know a system in order to sell that. And I, if you guys make it out to the conference, one of the things that we will be doing is also introducing and launching our program. So I want you guys to be there because वो थोड़ी limited seats के साथ हम उसको launch करेंगे, and it Okay. will show you exactly जो हमारा selling system है, what I used to scale my agencies, my network of businesses all the way to like 10 mil, and you guys can use the same one just to scale up to 1 mil. It's so easy. I know I've been saying this, but it's just so easy, and I feel like once you get it, you will get exponential growth. जिस तरह ये 50,000 से ये बच्चे ने 15 लाख तक जंप मारी ना, सेम चीज आप लोगों के साथ होगी. Once you figure it out, literally इस तरह आपका ग्राफ जाएगा. Okay. All right. And one last question, again, it's related to the conference. Then we're going to ending the question answer Q&A. It's what general topics are part of the conference. Like, I think the audience should know about that as well. Yeah, that's a good question. So अभी हम speakers के साथ ना we've finalized them. Now what we're going to do is in the next 1 to 2 weeks we're going to sit with them and figure out कि उन्होंने किस टॉपिक्स के ऊपर बात करनी है. So it's not going to be वो घिसे पिटे स्टाइल के मेरी जर्नी ये थी, मैं इतने कमा लिए हैं, मैं बड़ी चीज हूँ. No, nothing like that. I want them to come with really good topics that they can talk about and आपको उधर से वैल्यू मिले. बट जनरल थीम क्या होगी? फ्रीलांस डिजिटल इंडस्ट्री किस तरह चेंज हो रही है, हाउ कैन यू टेक एडवांटेज ऑफ दिस न्यू वेव, एआई की दुनिया में क्या चल रहा है, थोड़ा Okay. फेसबुक और गूगल एड्स के ऊपर बात होगी, हम सेल्स के पूरे सिस्टम के ऊपर बात करेंगे, मार्केटिंग कि कौन से तरीके हैं, लीड जेन के तरीके हैं और उनको किस तरह यूटिलाइज करना है. सो All right. जनरली इन सारी थीम्स को हम टच करेंगे. All right. Thank you so much, Saddam. Thank you, everyone, for joining us. And I hope all of your questions were answered. We really appreciate for all the good questions that will be bombarded on him. And yeah, thank you so much. We will be waiting for you to come live again. And by that time, I think more speakers will be finalized and we'll get a more insight regarding the conference. Maybe from Bali? इंशाल्लाह, बिल्कुल. Yeah. Okay. Thank you so much. Okay, thank you. Take care.